Hello guys, good evening. I welcome you all on Unacademy, India's largest learning platform. We will continue our previous year question series. Before starting the topic, thoda sa introduction part. Myself, Dr. Nidhi, I am alumni of King George Medical University, KGMU, Lucknow. I am teaching you all Physiology. अगर NEET PG point of view से बात करें तो हर साल on an average 17 question come in our examination. यानी scoring subject है, so everyone clear the concept so that you can also score more in your examination and you will be able to achieve your target. Unacademy learning app आप अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए and follow me out there. My page is unacademy.com/@kgmc. This is my referral code Dr. Nidhi. If you want to join any paid course, you can use this referral code to get instant 10% discount. काफ़ी सारे प्लस क्लासेस लिए हैं, काफ़ी सारे स्पेशल क्लासेस लिए हैं, so एनी टाइम यू कैन रिवाइज द टॉपिक. बात कर लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन की. तो बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन का क्या बेनिफिट मिलता है? You are able to attend both live and recorded session. You get an opportunity to learn from India's top educators. Live tests and live quizzes are there. From that you can analyze your preparation. You have flexibility. You can study on the device of your choice. There is a question bank which consists of 25,000 plus high yield clinical based latest examination pattern पे questions हैं. तो काफ़ी effective explanation के साथ है, तो आपके लिए काफ़ी beneficial होने वाला है. ये कमिंग है प्रिंटेड नोट. अभी के लिए आप PDF डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं टॉपिक को. बात कर लेते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, जहां आपको 2 प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है. एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको 2 प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल रहा है. फर्स्ट इज़ अनअकैडमी, सेकेंड इज़ प्रेप लैडर. तो अनअकैडमी के सारे प्लस बेनिफिट अब यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, लाइक लाइव क्लासेस, recorded classes, question bank, live tests, live quizzes and the PDF. Along with that you get access for the prep ladder. In this you can access the clinical and integrated essential, video lecture from the dream team, question bank 3.0, rapid revision and a snapshot, and you will also be provided with the treasure and dream notes. ठीक है, तो if you want to access the prep ladder also, go for the iconic subscription everybody. बात कर लेते हैं क्यों आपको अपना अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना चाहिए. अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपना अनअकैडमी लर्निंग ऐप, क्योंकि उस पर जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, बट दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द यूट्यूब सेशन. कैसे डिफरेंट है? स्पेशल क्लासेस हमेशा हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन होता है जिसमें आप 1-to-1 अपने एजुकेटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट को लाइव सेशन में क्लियर कर सकते हो. पोल्स के फीचर हैं जहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है. रेज अ हैंड का फीचर है जहाँ पे बात करके आप अपने एजुकेटर से अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो. अगर किसी एजुकेटर को आप फॉलो करते हो तो उनकी क्लास से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है. आफ्टर एवरी लेक्चर आप PDF डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो किसी भी समय किसी भी टाइम. तो काफ़ी डिफरेंट होता है यूट्यूब सेशन से, काफ़ी स्पेशल होता है. तो अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कीजिए अपना अनअकैडमी लर्निंग ऐप. स्टार्ट करने के लिए आपको एक रेफरल कोड डालना होगा. फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं हमारी स्पेशल क्लासेस. डॉक्टर निधि टाइप कर दीजिएगा, जितनी भी फ्री क्लासेस हैं वो ओपन हो जाएंगी. ठीक है, एज आई सेड क्वेश्चन बैंक है जिसमें 25,000 प्लस क्वेश्चन है, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन ऑन द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन. तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए. बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की. तो प्लस सब्सक्रिप्शन की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? 4 ईयर की फ़ीस है 60,000, 36 मंथ की फ़ीस है 50,000, 24 मंथ की फ़ीस है 40,000, 18 मंथ की फ़ीस है 32,500, 1 ईयर की फ़ीस है 27,500, 6 मंथ की फ़ीस है 22,500, 3 मंथ की फ़ीस है 12,500, 2 मंथ की फ़ीस है 7,500. तो काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस में आपको मिल रहा है. प्लस आपका एडिशनल 10% ऑफ हो जाएगा व्हेन यू अप्लाई माय रेफरल कोड, दैट इज डॉक्टर निधि. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की भी बात कर लेते हैं. तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 4 ईयर की जो है उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है 67,500, 36 मंथ की फ़ीस है 58,500, 2 ईयर की फ़ीस है 49,500, 18 मंथ की फ़ीस है 45,000, 1 ईयर की फ़ीस है 40,500 ओनली. प्लस आपको यहाँ पे भी एडिशनल 10% ऑफ मिल जाएगा व्हेन यू अप्लाई माय रेफरल कोड,
दैट इज डॉक्टर निधि। अभी इंट्रोडक्टरी मंथ चल रहा है, 7,500 इसकी फ़ीस नहीं है 2 मंथ की, अभी फ़ीस इसकी सिर्फ 6,750 है। प्लस एडिशनल ऑफर चल रहा है, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है एंड 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे आपको 4 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। तो इन सब का बेनिफिट आप उठा सकते हो, बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ जाएगा आपको। बात कर लेते हैं, वी हैव अ ग्रैंड टेस्ट, अल्टीमेट ग्रैंड टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पे नहीं करना आपको। 4 सितंबर को वी हैव ग्रैंड टेस्ट एट 9 AM, डोंट मिस दिस ग्रैंड टेस्ट। ठीक है, ग्रैंड टेस्ट में आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, किस तरह आपको अपने टाइम को डिवोट करना है, एग्जाम इन्वायरमेंट से आप फ्रेंडली हो सकते हो। सो डू गिव दिस ग्रैंड टेस्ट दोज हु आर गिविंग द एग्जामिनेशन दिस ईयर ओनली। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए ये टेस्ट। तो टाइमिंग नहीं भूलिएगा। लास्टली द बग्स बाउंटी, दिस इज़ फॉर ऑल द लर्नर्स। अगर आपको लगता है कि किसी भी एजुकेटर के कंटेंट में कुछ इनअप्रोप्रिएसी है, यू कैन क्लेम योर प्राइस। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्टली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए लेट्स क्रैक नीट पीजी पेज को। यहाँ पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, 32-year-old high altitude mountaineer is observed to have hematocrit of 70%. ठीक है, which of the following represent the most likely cause or explanation? Option A, polycythemia with increased red cell mass, relative polycythemia due to dehydration. Option C, polycythemia due to hemoconcentration. Option D, polycythemia with high altitude pulmonary edema. ठीक है, क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया। चलो एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन। Everybody answer this question. Why the hematocrit is increased in high altitude mountaineers? जल्दी जल्दी आंसर करो। 32-year-old, yes, very true. Answer is polycythemia with increased red cell mass. See what happened, हमारा normal जो hematocrit होता है that is 45 to 50%. Out here the hematocrit is increased. Why is it so? Because at high altitude there is hypoxia. And due to hypoxia what happened? Erythropoietin hormone is produced. And this erythropoietin hormone causes RBC production. And that is responsible for increased hematocrit in high mountaineers. ठीक है, प्लस एक फैक्टर और होता है hypoxia inducible factor. Anybody who know this? What is hypoxia inducible factor? ठीक है, normoxia condition. See what happened in hypoxia. This hypoxia inducible factor separates from von Hippel-Lindau protein. ठीक है, और ये क्या करता है? It acts as a transcription factor for erythropoiesis. ठीक है, जबकि नॉर्मोक्सिया कंडीशन में क्या होता है? दिस हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर is associated with this von Hippel-Lindau protein and this combination undergo degradation. ठीक है,
So whenever person is at high altitude due to hypoxia, this transcription factor become active, and that causes increase in erythropoiesis, and that's why hematocrit increases. Is this clear, everybody? Chalo, coming to the next question. In high altitude mountain sickness, feature of pulmonary edema is decreased pulmonary capillary permeability, increased pulmonary capillary pressure, normal left atrial pressure, increased left ventricular back pressure. Chalo, everybody answer this question. High altitude mountain sickness, what will be the feature of pulmonary edema? In high altitude, we all know there is a disease called high altitude pulmonary edema is there, high altitude cerebral edema is there. Why are they so? What are the features in that? Everybody answer this question. In high altitude there is pulmonary edema. Why is it so? Yeah, very true. हमारा फीचर्स क्या मिलेगा उसमें? पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है? पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज होता है. दैट्स वाई हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर होती है, एंड दैट्स कॉज एडिमा. ठीक है. Atrial pressure, ventricular pressure all remain normal. So answer C is also correct. So B and C both are correct. No, answer is not D. See what happened in pulmonary edema. क्या होता है? Due to hypoxia क्या होता है? What happened? Due to hypoxia हमारा pulmonary के रेस्ट ऑफ द ऑर्गन में तो वेजोडाइलेशन होता है. इन पल्मोनरी वी हैव वेजो कंस्ट्रिक्शन, एंड ड्यू टू दिस वेजो कंस्ट्रिक्शन, पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है? सी बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप देखना. ओके, दिस इज अबाउट सेरेब्रल एडिमा. चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं फ्लो चार्ट. ड्यू टू हाइपोक्सिया व्हाट विल हैपन इन लंग? रेस्ट ऑफ द ऑर्गन में वेजो डायलेशन होता है, बट इन पल्मोनरी वी हैव वेजो कंस्ट्रिक्शन. ये क्लियर है एवरीबडी? व्हाई इज इट सो? पता है सभी को? ड्यू टू पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या होगा? ब्लड फ्लो बिकम अनइवन और पैची. ठीक है. तो इन सम एरिया pressure will be more. ठीक. एंड ड्यू टू दैट क्या होता है? हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर करता है. ड्यू टू दैट बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर आउट, एंड दैट कॉजेज extravasation of fluid, and that lead to the edema. This happen in our cerebral edema, sorry, pulmonary edema, high altitude pulmonary edema. ठीक है. क्लियर हुआ एवरीबडी? सो आंसर विल बी बी, इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर. सम एरिया में कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज होगा ड्यू टू वेजो कंस्ट्रिक्शन, एंड दैट लीड टू द एडिमा. एट्रियल प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर, उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते. ठीक है. क्लियर है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो. ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? प्रोसीड करें फर्दर. चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ माउंटेनर ascend to the 18,000 feet in 2 days without supplemental oxygen. At the height of ascent, the changes are increased partial pressure of carbon dioxide, decreased barometric pressure, decreased inspired oxygen,
decreased partial pressure of oxygen, increased pH. मल्टीपल आंसर है तो बिल्कुल ध्यान से एक एक ऑप्शन देखिएगा. A mountaineer ascended to the 18,000 feet in 2 days without supplemental oxygen. At the height of ascent, the changes are everyone answer this question. B E D A C D. See what happened. High altitude पे जाएंगे तो what happened to the barometric pressure? At altitude the barometric pressure, atmospheric pressure is less. ठीक, barometric pressure less होगा तो individual gases का partial pressure क्या होगा? That will be also less. So partial pressure of oxygen will be less. And this will stimulate our chemoreceptor. Chemoreceptor stimulate होगा, हमारा क्या होता है? Hypoventilation starts. And due to that, what will happen? Carbon dioxide washout will be there. So what will happen to the partial pressure of carbon dioxide? Partial pressure of carbon dioxide will decrease, not increase. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगा तो कार्बोनिक एसिड क्या होगा? कम होगा तो हमारा एसिडिटी कम होगी, सो पीएच इंक्रीजेस. सो आंसर इज इन डिक्रीज बैरोमेट्रिक प्रेशर, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज पीएच. ठीक है, सो आंसर इज बी, डी एंड ई. इज दिस क्लियर? ऑक्सीजन जो इंस्पायर्ड करेंगे दैट इज ओनली 21%. ओनली द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल डिक्रीज. इज दिस क्लियर एवरीबडी? चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. During acclimatization to high altitude, all of the following take place except increase in minute ventilation, increase in sensitivity of central chemoreceptor, increase in sensitivity of carotid body to hypoxia, shift of ODC curve towards the left. During acclimatization to high altitude, all of the following take place except yes, very true Dr. Subhas. Answer is B only. See what happened. हमारा हाई एल्टीट्यूड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल डिक्रीज, दैट विल स्टिमुलेट आवर सेंट्रल कीमोरेसेप्टर, दैट विल इंक्रीज द sensitivity of our carotid bodies, aortic body to the hypoxia, that result into increased minute ventilation. But what happened to the ODC? See what happened during hypoxia. As we discussed, pH increase हो रहा है ना, and due to that respiratory alkalosis is occurring, and respiratory alkalosis की वजह से क्या होगा? ODC कर्व हमारा पहले तो लेफ्ट शिफ्ट होता है. ठीक है, अब क्या सिचुएशन आ गई? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, सो हमारा किस मेटाबॉलिज्म किस प्रोसेस से होगा?
एनारोबिक प्रोसेस से होगा. एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होगा, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है. सो ड्यू टू दैट ओडीसी कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट ओनली. ठीक है, तो यहाँ डुअल चेंजेस होता है ओडीसी कर्व में. इनिशियली इट शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट बट लैटर ऑन इट शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. क्लियर है एवरीबडी, इज दिस क्लियर? सो यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट लिखा था इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है. ठीक है, इनिशियली इट शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट बट लैटर ऑन शिफ्ट टुवर्ड राइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट. इज दिस क्लियर? चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन गोज टू द माउंटेन when he reaches to 5,000 feet he developed dyspnea. Which of the following correctly explain for the symptom? CNS depression, carbon dioxide washout, increased work of the breathing, increased blood flow to the pulmonary tissue. Everybody answer this question. A person goes to the mountain. When he reaches to 5,000 feet, he develops dyspnea. Which of the following correctly explain for the symptom? No. See what happened. Due to carbon dioxide washout, कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होता है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होता है. तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है दैट बिगिन टू डिप्रेस. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगा तो दैट विल इनहिबिट आवर रेस्पिरेटरी सेंटर एंड दैट रिजल्ट इनटू dyspnea. ठीक है, so answer is B. Is this clear? Coming to the next question. Which of the following adaptation will be apt to increase the work capacity at high altitude? Increasing workload, decreasing duration of exercise. Increasing workload, increasing duration of exercise. Decreasing workload, increasing duration of exercise. Decreasing workload, decreasing duration of exercise. ठीक है, सारे ऑप्शन पढ़ लिए. चलो, everybody answer this question. Yes, very good. Answer is C only. See what happened when we decrease the load. तो ड्यू टू ओवर वर्कलोड भी हाइपोक्सिया होता है. तो यहाँ पे जो हाइपोक्सिक ड्राइव होगा दैट विल बी लेस. ठीक है, तो हाइपोक्सिया हाई एल्टीट्यूड की वजह से हाइपोक्सिया प्लस वर्कलोड की वजह से जो हाइपोक्सिया होगा दोनों मिला के बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे. So that's why the adaptation occurring in our body will be fast. That is angiogenesis की अगर बात करें या erythropoiesis की बात करें तो दोनों ही फास्ट होती हैं. ठीक है, so this method is very apt to increase the work capacity at high altitude, decreasing workload and increasing duration of exercise. Clear everybody? Chalo, coming to the next question. Late effect of a mountain climber are all except hypoventilation, increased erythropoietin, increased bicarbonate excretion, decrease in mitochondria.
late effect of a mountain climber are all except. C. Very good, everyone. Decrease in mitochondria. Actually, what happened due to hypoxia? There is cellular acclimatization. Anybody, what is cellular acclimatization in hypoxia? ठीक है, सेलुलर एक्लेमेटाइजेशन में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नंबर इंक्रीजेस, ठीक है, एंड माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइमेटिक एक्टिविटी also increases, ठीक है. So this due to hypoxia, we all know, अभी हमने डिस्कस किया था, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा एंड दैट कॉजेज हाइपोवेंटिलेशन. हाइपोक्सिया की वजह से एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन इंक्रीज होगा, ठीक है. हाइपोक्सिया की वजह से हमारा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा एंड ड्यू टू रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस बाइकार्बोनेट विल बी एक्सक्रीटेड आउट. सो आंसर इज डी ओनली. Is this clear? Chalo, coming to the next question. At an altitude of 13,000 feet, the barometric pressure is given. We have to calculate partial pressure of oxygen at that pressure. ठीक है? Chalo, everybody answer this question. कैसे कैलकुलेट करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू बैरोमेट्रिक प्रेशर. दिस इज द फॉर्मूला. तो फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 21%. ठीक है, बैरोमेट्रिक प्रेशर इज गिवन, कैलकुलेट हो जाएगा. चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. At a high altitude of 3,000 meters, a person complains of breathlessness. All of the following can be used for the management of this person except, ठीक है, oxygen supplementation, immediate rapid descent, acetazolamide, IV digoxin. Everybody answer this question. I will be back in 1 minute. वेरी गुड एवरीवन. आंसर इज डी. वी ऑल नो डाइगॉक्सिन क्या करेगा? हमारा हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है. ऑलरेडी हाइपोक्सिया की वजह से क्या है? देयर इज सिंपैथेटिक ड्राइव एंड ड्यू टू दैट क्या होता है? हार्ट रेट ऑलरेडी इंक्रीज है एंड दिस डाइगॉक्सिन विल ऑल्सो इंक्रीज द हार्ट रेट. सो दिस इज नॉट यूज फॉर द ट्रीट मैनेजमेंट ऑफ दिस पर्सन. क्लियर एवरीबडी?
Very good. Coming to the next question. A person unacclimatized develop pulmonary edema in how many days or month? 19 to 21 days, 2 to 3 months, 2 to 3 days, 6 to 7 days. A person unacclimatized develop pulmonary edema in how many days? Very good, everyone. Second to third days. Mostly we say on the second night this pulmonary edema occurs. Very good. Coming to the next question. An astronaut stay in a microgravity for a prolonged period of time. Which of the following occur? Increase in bone mass, increase in maximum cardiac output, increase in red cell mass, decrease in blood volume. When an astronaut stay in a microgravity for a prolonged period of time, which of the following occur? Everybody answer this question. See, what is microgravity situation? Means zero gravity. When an astronaut reach a zero gravity situation, हमारा blood bone mass क्या होता है? Decrease होता है. Cardiac output decreases. Blood cell mass decreases. Blood volume decreases. So answer is D only. Clear, everybody? Chalo, coming to the next question. Nitrogen narcosis is caused due to nitrogen inhibit dismutase enzyme, increased production of nitrous oxide, increased solubility of nitrogen in nerve cell membrane, decrease in oxygen free radical. ठीक है, क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया? चलो, everybody answer this question. वेरी गुड एवरीवन. हमारा नाइट्रोजन नार्कोसिस क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन की जो सॉलिबिलिटी है वो लिपिड कंटेनिंग मेम्ब्रेन से ज़्यादा होती है. तो नर्व मेम्ब्रेन में लिपिड कंटेंट इज हाई, so it has increased solubility of nitrogen in this nerve cell membrane. That's why nitrogen narcosis occur. Very good. Coming to the next question. Cassian's disease is gas embolism, fat embolism, amniotic fluid embolism, or tumor embolism. Cassian's disease is everybody answer this question. Cassian's disease is very good everyone. Cassian's disease हम गैस एम्बोलिज्म को ही कहते हैं. ठीक है, आंसर इज ए ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रू अबाउट Cassian's disease. Oxygen release from tissue, carbon dioxide release from tissue, nitrogen release from tissue,
hydrogen release from the tissue. Casson's disease is due to everybody answer this question. This Casson's disease is due to, yeah, very good. हमारा नाइट्रोजन रिलीज होता है टिश्यू से, दैट्स वाई इट कॉजेज दिस Casson's disease, decompression disease. Clear everybody? चलो, coming to the next question. Casson's disease, pain in a joint is because of nitrogen bubble, oxygen bubble, carbon monoxide or air in joint. आई गेस अब इजी हो गया होगा, अभी जस्ट डिस्कस किया था. In Casson's disease, pain in a joint is because of कुछ पीछे गिर गया. Yes, very true. हमारा जो नाइट्रोजन बबल रिलीज होता है, that causes pain in a joint. Coming to the next question. A pilot in a Sukhoi aircraft is experiencing negative G. Which of the following physiological event will manifest in such situation? ठीक है. Hydrostatic pressure in veins of lower limb increases, cardiac output decreases, blackout occurs, cerebral arterial pressure rises. A pilot in a Sukhoi aircraft is experiencing negative G. Yes, very true. Cerebral arterial pressure rises. See what happened in negative G. Generally G क्या करता है, हमारा venous pulling करता है, but out here G is negative, so it will decrease the venous pulling, or you can say it will increase the venous return. Venous return increase होगा, it will lead to increase in cardiac output. ठीक है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, ब्लड रीचिंग टू आई विल इंक्रीज, इट विल लीड टू रेड आउट इफेक्ट. ठीक है, सो नो ब्लैक आउट, नो कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस, वीनस पुलिंग डिक्रीज होगा, नॉट इंक्रीज. सो आंसर इज डी ओनली. Coming to the next question. Decompression sickness is seen in diver, pilot, diver and pilot, diver, pilot and mountaineer, diver, pilot, mountaineer and astronaut. Decompression sickness is seen in decompression sickness. Decompression sickness कब होता है, जब कोई डाइवर रैपिडली एक्सटेंड करता है फ्रॉम rapidly ascend to sea level from deep sea
to the sea level. ठीक है, डीप सी से सी लेवल पे अगर रैपिडली एक्सटेंड करता है देन दिस डीकम्प्रेशन सीकनेस अकर्स, दैट अकर ओनली एंड ओनली इन द डाइवर. ठीक है, not in pilot, this will be seen not in mountaineer, not in astronauts. Clear everybody? Now coming to the next question. Equilibrium potential of an ion is calculated by Gibbs-Donan equilibrium, Nernst equation, Goldman equation, Donan's equilibrium. ठीक है, चलो everybody answer this question. Equilibrium potential of an ion is calculated by. No, it's not a Gibbs-Donan equilibrium. Gibbs-Donan equilibrium किस वजह से होता है? Gibbs-Donan equilibrium हमारा जो anion है, प्रोटीन क्या है? It is anion and that is non-diffusible. तो inside the cell this negative ion attract the positive ion. ठीक है, and positive ion में क्या होता है? Sodium ion move inside the cell. Along with the sodium ion, we all know sodium ion is most osmotically active substance. So it will bring water molecule along with it. So what happened? Protein and ion is attracting a cation. Along with that, water molecule also move inside this. ठीक है, and due to that हमारा सेल रप्चर होने की टेंडेंसी होती है. सेल की क्या होगी? Due to water रप्चर होने की टेंडेंसी होती है. But the sodium ion is again pushed out from another end via the sodium potassium pump, and this equilibrium is known as Donan's equilibrium. ठीक है, Gibbs-Donan's equilibrium ये होता है. Nernst equation होता है, that is equilibrium potential of one ion, किसी भी आयन का बात कर ले या cation की बात कर ले, तो is equal to plus minus 61 log concentration outside upon concentration inside, or you can say concentration inside upon concentration outside. This is the Nernst equation जिससे हम individual ion की potential equilibrium potential निकालते हैं. ठीक है, clear everybody? Answer is B only. चलो, this is for the single ion. और गोल्डमैन इक्वेशन जो होता है ना, वो टोटल आयंस की हम जब इक्विलिब्रियम पोटेंशियल समेशन के साथ निकालते हैं देन इट इज कॉल्ड एज गोल्डमैन इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला सेम एज आई सेड, 61 log concentration outside upon concentration inside, or you can say 61 log concentration inside upon concentration outside. Take. Coming to the next question. Resting membrane potential is close to isoelectric potential of which ion? Sodium, chloride, potassium, manganese. Resting membrane potential is close to isoelectric potential of वेरी गुड एवरीवन, इट इज सी. हमारा कितना होता है? इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम इज एनीबडी? इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम इज इट इज -90 millivolt. ठीक है, and resting membrane potential of skeletal muscle. No, RMP of nerve is -470 millivolt,
but RMP of skeletal muscle, cardiac ventricle is minus 90 millivolt. ठीक है, so this is equal to equilibrium potential of potassium only. ठीक है, clear हुआ everybody? Equilibrium potential of sodium is plus 60 millivolt, calcium is plus 130 millivolt, potassium is minus 90 millivolt, chloride is minus 70 millivolt. चलो, coming to the next question. Same thing is written out here. RMP of skeletal muscle minus 90 millivolt. RMP of cardiac ventricle is minus 90 millivolt. चलो, resting membrane potential is mainly due to which ion? Sodium, potassium, chloride, magnesium. Yes, resting condition में हमारा जो membrane है that is highly permeable to potassium ion and this potassium ion is responsible for resting membrane potential. ठीक है, याद रहेगा. Sodium ion is not responsible for resting membrane potential, it is responsible for action potential. ठीक. Coming to the next question. What is or are effect on a membrane when extracellular concentration of potassium is decreased? Decreased magnitude of RMP, increased negativity inside the membrane, increased magnitude of RMP in decreased negativity of membrane. ठीक है, क्या है? ECF potassium is low, is decreased. So what will be the effect on the membrane? See what happened. This is our membrane, this is inside the membrane, this is outer side. Normal condition में क्या होता है? Potassium ion concentration inside is more and outside is less. So that's why हमारा potassium का diffusion कहाँ से होता है? From inside to outside. ठीक. अब क्वेश्चन कह रहा है ECF पोटेशियम और भी ज़्यादा डिक्रीज हो गया है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? और ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो हमारा जो इफ्लक्स है पोटेशियम का दैट विल इंक्रीज एज पॉजिटिव आयन इज मूविंग आउटसाइड द सेल. व्हाट विल हैपन टू द इनसाइड? द नेगेटिविटी विल इंक्रीज. क्लियर हुआ? Answer will be B. Chalo, coming to the next question. Most diffusible ion in excitable tissue is sodium, potassium, phosphate or chloride. Most diffusible ion in excitable tissue is most diffusible ion in excitable tissue is no, answer is not sodium. सबसे ज़्यादा diffusible होता है हमारा potassium, then
क्लोराइड, देन हमारा आता है सोडियम. दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजिबिलिटी. आंसर विल बी ओनली एंड ओनली बी. ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्साइटेबल टिश्यू इज लीस्ट परमिएबल टू. ठीक है, हो चुका है, स्किप करते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज 10 millivolt. Extracellular concentration is 100 millivolt. We have to calculate the equilibrium potential of potassium based on Nernst equation. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलो एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम. नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? अभी जस्ट बताया था. एवरीबडी, व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन? इट इज equal to plus minus 61 log concentration inside upon concentration outside. ठीक है, या inside ECF upon ICF भी कर सकते हैं. 100 upon 10. ठीक है, तो it is equal to 61 log 10. log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1. So plus minus 61 millivolt. So answer will be A. Very good, Dr. Ajit. Answer is A. Coming to the next question. A negative ion concentration is 100 millimole per liter outside. यानी ECF में कितना है? ECF में 100 millimole per liter है. And ICF में क्या है? It is 10 millimole per liter. ठीक है, we have to calculate equilibrium potential via the Nernst equation. चलो everybody answer this question. एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. हायर कंसंट्रेशन कहाँ है? ECF में. तो मूवमेंट किधर से होगा? फ्रॉम ECF टू ICF. ठीक है, कैलकुलेट करते हैं. प्लस माइनस 61 लॉग कंसंट्रेशन आउटसाइड अपॉन कंसंट्रेशन इनसाइड. इट इज इक्वल टू 61 log 10. सेम थिंग, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 61. ठीक है, अब कैसे डिसाइड करेंगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कैसे डिसाइड करते हैं? देखो, नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन दी है ना, तो एज मूवमेंट नेगेटिव आयन का कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. तो हमारा इनसाइड में क्या होगा? नेगेटिविटी विल इंक्रीज. ठीक, सो द आंसर विल बी माइनस 61 मिलीवोल्ट. ठीक है, अगर पॉजिटिव आयन अगर अंदर मूव कर रहा होता तो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही होती, तो हम कहते हैं कि प्लस 61 मिलीवोल्ट होगा आंसर. अगर नेगेटिव आयन आउटसाइड मूव करे, नेगेटिव आयन आउटसाइड मूव करे तो इनसाइड में क्या होगा? पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, तब भी हम पॉजिटिव लिखेंगे. इज दिस क्लियर एवरीबडी? कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा इक्विलिब्रियम पोटेंशियल? चलो, coming to the next question. A cell membrane of a cell is freely permeable to 3 ions X, Y and Z. At resting membrane potential, the respective equilibrium potential of X and Y is minus 30 and minus 40 millivolt.
what will happen to them? Yeah, very true अजीत. Compare from the inside. Inside में अगर negativity increase हो रही है तो negative, inside में अगर positivity increase हो रही है तो positive. ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं. A resting membrane potential, equilibrium potential of X and Y are -30 and -40 millivolt. What will happen to the membrane potential if a drug is infused which will block the permeability of Z? Chalo, everybody answer this question. Depolarization will occur, hyperpolarization will occur, no change, hyperpolarization following repolarization. देखो रेस्टिंग कंडीशन में क्या होगा, तीनों आयन के वजह से जो मूवमेंट की वजह से इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी जीरो. सो जेड की वजह से कितना आ जाएगा हमारा +17 मिली वोल्ट. तो जेड आयन हमारा क्या कर रहा है, पॉजिटिविटी इनसाइड द सेल इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, पॉजिटिविटी इंक्रीज कर रहा है मीन्स यू कैन से नेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग. सो इट इज कॉजिंग डीपोलराइजेशन. बट जेड आयन का हमने मूवमेंट ब्लॉक कर दिया. ठीक है, जेड आयन का मूवमेंट हमने ब्लॉक कर दिया. सो दैट विल लीड टू द मेम्ब्रेनल डीपोलराइजेशन. ठीक है, क्लियर हुआ. चल कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्स, वाई एंड जेड आर 3 आयन्स परमेबल. एक्स की वजह से पोटेंशियल है -50, y की वजह से -30. if at resting membrane potential when there is no net electrogenic transfer the value of Z will be. सेम क्वेश्चन है, रिपीट है, स्किप करते हैं. ओके, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन. आज के सेशन में किसी को कोई डाउट? किसी को भी आज के सेशन में कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं. चलो, होप यू ऑल लाइक द सेशन. इफ यू लाइक द सेशन डू लाइक एंड शेयर, दिस इज इम्पॉर्टेंट. जितना ज़्यादा शेयर करोगे क्लास उतनी इंटरैक्टिव होती है. तो डू शेयर एवरीबडी. अपने ग्रुप में शेयर किया कीजिए क्लासेस को. अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स क्रैक नीट पीजी, एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई क्लासेस हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. टेलीग्राम ऐप पे भी आप सर्च कर सकते हो, लेट्स क्रैक नीट पीजी. रेस्पिरेटरी कंट्रोल. डॉक्टर अजीत, रेस्पिरेटरी कंट्रोल में आपको क्या जानना है? हाइपोक्सिया से रिलेटेड. जल्दी रिप्लाई कीजिए. व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लेन मी इन द रेस्पिरेटरी कंट्रोल? You are asking about the basic respiratory control क्या? See what happened. We have respiratory center. ठीक है, respiratory center basically we have in pons and medulla. ठीक है, in pons we have pneumotaxic center, and we have apneustic center. ठीक है, in medulla we have
Botzinger complex. We have dorsal respiratory group of neuron. ठीक है, we have ventral respiratory group of neuron. ठीक है, चलो डिस्कस कर लेंगे डॉक्टर जी. न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन. ठीक है, while apneustic center prolonged inspiration, while pneumotaxic center inhibit apneustic center, or you can say ये इंस्पिरेशन को हॉल्ट करता है. इट हॉल्ट द इंस्पिरेशन. ठीक है, प्री बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स इनिशिएट respiration. ठीक है, dorsal respiratory group of neuron generate RAM signal and that was responsible for a steady rise in tidal volume. ठीक है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन हमारा फोर्सफुल एक्सपिरेशन में वर्क करता है, नॉर्मल एक्सपिरेशन में इसका कोई रोल नहीं. ठीक है, इसी को हम डायग्राम से देखते हैं. दिस इज आवर अपर पॉन्स, दिस इज आवर लोअर पॉन्स, दिस इज आवर मेडुला. ठीक है, अपर पॉन्स में वी हैव न्यूमोटैक्सिक सेंटर, in lower pons we have apneustic center, in medulla we have pre-botzical dorsal respiratory group of neuron and ventral respiratory group of neuron. ठीक है, ये हो गया हमारा पॉन्स का पार्ट, ये हो गया हमारा मेडुला का पार्ट. फर्स्ट सिचुएशन की हम बात करते हैं, दैट इज लीजन बिलो मेडुला. ठीक है, मेडुला से बिलो अगर लीजन है तो मेडुला में पॉन्स विल बी वर्किंग, मेडुला विल बी वर्किंग. सो हमारा इनिशिएट भी हो जाएगा और हमारा रेगुलराइज भी हो जाएगा ब्रीदिंग, बट दिस इनिशिएशन विल नॉट रीच टू द डायफ्राम. ठीक है, ये इनिशिएशन हमारा डायफ्राम पे नहीं रीच करेगा. ठीक, बिकॉज द नर्व कमिंग फ्रॉम द मेडुला, दैट इज फ्रेनिक नर्व, विल नॉट बी रीचिंग टू आवर डायफ्राम. ठीक है, डायफ्राम तक नहीं पहुंचेगा, रेस्पिरेशन विल स्टॉप. डॉक्टर अजीत, फर्स्ट सिचुएशन क्लियर है. सेकेंड सिचुएशन पे हम आ जाते हैं, लीजन एट द पोंटोमेडुलरी जंक्शन. पोंटोमेडुलरी लीजन. So out here what will happen? Medulla will be working but pons will not be working. Medulla क्या करेगा? Initiate कर देगा respiration को. Initiation of respiration will be there but regularization of respiration will not be there. So out here we will get irregular breathing. लास्ट लीजन की हम बात कर लेते हैं, मिड पोंटाइन लीजन की. दिस इज मिड पोंटाइन लीजन. सो व्हाट हैपन इन मिड पोंटाइन लीजन? Our pneumotaxic center will, apneustic center will be working, but pneumotaxic center will not be working. So what will happen? Apneustic center क्या करता है? हमारा प्रोलॉन्ग इंस्पिरेटरी स्पाज्म कराएगा.
ठीक है. So out here we have prolonged inspiratory spasm, and this type of breathing is also known as, anybody, this type of breathing is also known as apneustic breathing. ठीक, क्लियर एवरीबडी? तो सारे सिचुएशन क्लियर है. अगर पॉन्स के अबव होगा तो हमारा ब्रीदिंग नॉर्मल होगा. ठीक है. यहाँ पे एक सिचुएशन आता है मिड पोंटाइन लीजन प्लस वेगस कट. वेगस कट भी यहाँ ज़रूरी है फॉर द प्रोलॉन्ग इंस्पिरेटरी स्पाज्म और एपनिस्टिक ब्रीदिंग, बिकॉज वेगस नर्व भी क्या करता है, वेगस नर्व ऑल्सो इनहिबिट आवर एपनिस्टिक सेंटर. अगर हमारा वेगस नर्व वर्क कर रहा होगा तो एपनिस्टिक सेंटर इनहिबिट हो जाएगा, एंड एपनिस्टिक सेंटर इनहिबिट हो जाएगा, प्रोलॉन्ग इंस्पिरेटरी स्पाज्म विल नॉट बी देयर. डॉक्टर अजीत, लीजन बिलो मेडुला. देखो मेडुला से हमारा इनिशिएशन हो जाएगा, पॉन्स में रेगुलराइज भी हो जाता, बट जो इनिशिएशन होगा वो हमारा रीच करता है फ्रेनिक नर्व्स के थ्रू टू द डायफ्राम. ठीक है. बट लीजन हमारा मेडुला के बिलो है, तो वहाँ से जो नर्व अराइज कर रहा है दैट इज डैमेज. सो द फ्रेनिक नर्व इज डैमेज, सो द इनिशिएशन ऑफ ब्रीदिंग विल नॉट रीच टू द डायफ्राम, सो डायफ्रामिक कॉन्ट्रैक्शन विल नॉट बी देयर, सो रेस्पिरेशन विल स्टॉप. ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबडी? इज दिस क्लियर? ठीक है, क्लियर हुआ? डॉक्टर अजीत, इज दिस क्लियर? जल्दी से रिप्लाई कीजिए. चल, आज का सेशन ये एंड करते हैं. होप यू ऑल लाइक दिस सेशन. रेगुलर मेहनत करते रहिए, यू विल डेफिनेटली एबल टू अचीव योर टारगेट, यू विल डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम विद गुड रैंक. सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर एवरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. This is my referral code, again repeating, if you want to join any paid course you can use this referral code to get instant 10% discount. This referral code is valid for each and every examination, so any friend of yours or any family member of yours, if they are willing to take Unacademy subscription regarding any field, they can also use this referral code to get instant 10% discount. ठीक है. See you all tomorrow. The timing will be same. We will continue our question series.